Assalamu alaikum everyone. My name is Sameen Shahid and I am a certified British Council IELTS trainer. I have been in this profession for around about 5 years now, and we'll be starting our IELTS lecture from the very beginning. First of all, let's begin with the orientation, that what IELTS is, how many types are there, and how students get enrolled, and how much time do they need to get themselves prepared for it. Obviously, everything requires time. It will also be taking time. It's not that tough. The people think कि पता नहीं कितना मुश्किल है. It's not like that. और लोगों ने बहुत एक misconception बना लिया है कि IELTS के लिए that you need to be pro in English. ऐसा भी नहीं है. Of course you need to be good at it, but ऐसा नहीं है कि that you need to be very fluent और बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब as a native English speaker की तरह बोलना है. No, it's not like that. So let's just begin with the very first lecture. Bismillahirrahmanirrahim. The very first question, which is to be, आपको जो पता होना चाहिए, which is what is IELTS? IELTS is actually the abbreviation of International English Language Testing System. Normally students इसको IELTS बोलते हैं. IELTS होता है और this is actually an abbreviation. आप देखते भी होंगे जिसको हम bold letters में लिखते हैं, block letters में लिखते हैं. And it is an international test, which is actually an English language proficiency test, because English is an international language and it is spoken all around the globe. So आपको किसी भी country में जाना है for higher studies, even for immigration, maybe for if you are already having visa of abroad, आपका visa expire हो रहा है and you need to extend it, or in case if your family lives there और आपको उनके पास जाना है, or even if your spouse lives there और आपको spouse के पास जाना है, तो उसके लिए that you have to go through this test. ठीक है, इसकी वेरियस टाइप्स हैं एंड एवरी टाइप, और आप कह सकते हो कि इसका जो भी टेस्ट है IELTS का, उसमें आपको वेरियस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, राइट? It is a UK based test and yes, obviously it will be in English. Well, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी, लोगों ने एक मिसकंसेप्शन से बना लिया है दैट आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रो होना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इसमें आपके ना सिर्फ इंग्लिश जज हो रही है, ना सिर्फ इंग्लिश इवेलुएट हो रही है, बट ऑल्सो how well you are good at management of your things. It is about skills management, it is about time management, it is about how well you perform while you are in a panic mode. ठीक है, it's about how beautifully you handle the things and आप कितना अच्छा उसको स्ट्रेटजाइज करते हैं, आपको टैक्टिक्स आने चाहिए. इट्स ऑल अबाउट एक्चुअली टैक्टिक्स एंड प्रैक्टिस. द मोर यू डू द प्रैक्टिस एंड मोर यू गेट अलॉन्ग विद इट, आई मीन अबाउट द टिप्स एंड द स्ट्रेटजीज, आई डोंट थिंक सो IELTS का टेस्ट इतना टफ है आप सबके लिए. फिर ऑलराइट, talking about the types of IELTS, well students, there are three types of IELTS. Number 1, which is academic IELTS. Number 2, general IELTS. And number 3, life skills IELTS exam. We'll be discussing the types one by one. And let's begin with the very first one, which is academic IELTS. As the name is indicating, this is something related to academics, right? So if a person is actually willing to go abroad for higher studies, if the person is just going for matriculation, you can say, I mean, like, it's not about that कि सिर्फ higher studies के लिए जाना है. You can also go for the matriculation, you can go for the secondary school education, FSC, pre-medical, pre-engineering. If you want to go for the commerce studies and FSC, ICS, whatever you call it, I think, and a simple FA if you want. Of course, then moving on to the higher studies, including MBBS, BDS, engineering fields, or business management and HR courses and all that. So whatever the course is and whatever the you can say the stage of learning it is, and undergraduate, bachelor's, master's, PhD program, even these doctors and nurses who go for the PLAB test, all of them have to go through this academic IELTS. ठीक है. Okay, talking about the academic IELTS, if a person whose native language is not English wants to study at undergraduate or postgraduate levels in a country in which native language is English, or if someone is seeking professional registration, for example, doctors and nurses, then he or she have to give this test. Exactly. This is what I already said earlier.
Well, students, the very important question which is asked frequently that IELTS का score कैसे आता है? आपने अक्सर सुना होगा that it is about in bands in total. So there are total 9 bands. It's not like about हमारे जब whenever we think of the bands or whenever we hear of the bands, पता नहीं mind में एक अजीब सा कोई wave सी आती है that what bands is actually, you know, it's a big question mark over here. Well, it's not that much, you can say different from that of total scoring or marking. just बिल्कुल वही concept है students. like for suppose आप स्कूल का एग्जाम देते हैं या यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एग्जाम देते हैं and let's suppose वहाँ पे टोटल मार्क्स हैं एक टेस्ट के 20 मार्क्स राइट and you score 16 out of 20 or you can say 10 on 20 or whatever the score is. let's suppose हम 10 को ले लेते हैं 10 में से आपने स्कोर किया है 5 on 10 6 on 10 7 on 10. IELTS में हमारे पास जो टोटल स्कोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स. हम उसमें स्कोर नहीं लिखते हम उसमें बैंड्स लिखते हैं. सो वहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ बैंड्स जो टोटल होते हैं वो होते हैं 9 बैंड्स. सो यू आर एक्चुअली इवैल्यूएटेड और गिवन मार्क्स और यू कैन से यू आर गिवन बैंड्स फ्रॉम 9. ठीक है. लेकिन these bands you can जो आपको मिल रहे हैं these can be either in the whole number form like it can be 6 on 9 7 out of 9 8 out of 9 or and also it can be in the decimal fraction as well. it can be 6.5 it can be 7.5 but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है students कि 6.25 होगा या 6.75 होगा और यहाँ पे राउंड ऑफ वाली स्ट्रैटेजी भी नहीं लगती है. लाइक यूनिवर्सिटी में इफ़ यू आर गेटिंग 17.5 आउट ऑफ 20 तो एग्जामिनर्स जो होते हैं आप कह सकते हो जो चेकर्स होते हैं वो 17.5 को राउंड ऑफ करके कंप्लीट होल नंबर फिगर दे देते हैं. बट इट्स नॉट लाइक दैट इन द IELTS एग्जामिनेशन. 9 बैंड्स में से अगर आप 6.5 स्कोर करें देन इट मीन 6.5 ही है वो. इट वॉन्ट बी कंसिडर एज अ होल नंबर द वेरी नेक्स्ट होल नंबर या वो 6 भी नहीं कंसिडर होगा. 6.5 मीन 6.5. ठीक है. देन अभी हम एकेडमिक IELTS की बात कर रहे थे दैट इट इज़ फॉर स्टडीज़ वीज़ा ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू गेट दैट एंड दैट कैन बी ऑफ एनी स्टेज either मैट्रिक FSC undergraduate bachelor's PhD and whatever. well there are also the type of academic IELTS and the one is the simplest one which is simply known as IELTS academic and the other is IELTS UKVI academic. Let's go through these two types that what is actually IELTS academic and IELTS UKVI academic. Well students, both tests are exactly the same. I mean talking about the structure, talking about the exam, talking about the modules which IELTS exam has. So these are exactly the same. Only difference is with the word UKVI. That's it. Otherwise exam you can say marking same है. ठीक है. और एग्ज़ाम डे प्रॉबेबली डिफरेंट हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस एग्ज़ाम डे भी सेम होता है. बेसिकली IELTS UKVI academic can be used to prove your English language abilities in support of a UK visa. As the name says na UKVI, it means it has some of the connection with UK country probably. It's not about being probably you can say but obviously it is in the support of UK visa. So every student who wants to apply in UK especially for undergraduate must have IELTS UKVI academic. Students, okay, let's just talk about UKVI academic in detail now. As I already said, there is no difference in between academic and UKVI, but it just goes with the type or you can say just with the name. And obviously UKVI के जब आप for suppose okay if a person has done FSC and he wants to go for the bachelor studies abroad and UK में जो bachelor study होती है that is for 3 years right. But वो students जो FSC में the score up to 60% or maybe less than 60% nearly equal, you can say that they have a window of about 50 to 60% marks in their FSC. So those students do not go to the bachelor's class directly. They have to go through the foundation year first of all. So obviously वो फिर 4 years का bachelor's हो जाता है. 3 years के बैचलर्स प्रोग्राम में बैठने से पहले दे हैव टू अटेंड द फाउंडेशन ईयर विच इज़ ऑफर्ड बिफोर द बैचलर स्टडीज़. एंड फॉर दैट के स्टूडेंट्स जो UKVI जो स्टूडेंट्स जिन्होंने UK जाना होता है दे गो फॉर द UKVI टेस्ट. वो सिंपल एकेडमिक नहीं देते. उन लोगों के लिए तो कंपल्सरी है कि जो फाउंडेशन मतलब यू कैन कॉल इट लाइक वेरी सिंपल इन दिस वे. दोज इंडिविजुअल्स हु आर गोइंग इन द फाउंडेशन ईयर बिफोर bachelors they have to give UKVI academic. This is mandatory for them right. But
there is an also you can say another plus point or an advantage for other students जो masters के लिए जाना चाहते हैं. Let's suppose there is a person who wants to go for masters and he wants to do master's study in business administration, right? But unfortunately he thinks he's not good at it. I mean, performing in some of the modules. Modules, because I just said modules, so let me tell you about the modules. First of all, there are actually 4 modules: listening, reading, writing and speaking. Let's suppose that person considers he's not good at writing module, or maybe he's not good at reading module. So in that case, वो student UKVI academic दे सकता है. Let's suppose उसको टोटल नंबर ऑफ बैंड्स चाहिए, वो हैं 6.5 ओवरऑल विद नन ऑफ द मॉड्यूल लेस देन 6. ठीक है, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द मॉड्यूल्स व्हेन वी विल बी स्टडिंग अदर स्लाइड्स, राइट? सो अभी इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि UKVI का एडवांटेज किस तरह से वर्क करता है. Alright, so we were talking about the master's level कि अगर एक student है, he thinks that उसको writing module में 6 bands चाहिए थे, but unfortunately he couldn't score in it, और उसने IELTS UKVI academic दिया हुआ है. तो if he gets 5.5 instead of 6, it means he has not achieved what he was about to or what he had to. उसने वो अचीव नहीं किया. बट उस केस में स्टूडेंट्स UKVI academic वालों के पास एक एडवांटेज होता है, they still get the student visa. ठीक है, बट उसके लिए होगा क्या, दैट बिफोर एंटरिंग इनटू मास्टर्स क्लास, or you can say before entering into the first semester, he or she will be taking English proficiency course maybe of around 2 weeks or maybe around 3 weeks. लेकिन वो आप उसको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है उस स्टूडेंट को. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर किसी ने सिंपल IELTS एकेडमिक दिया होगा इस केस पे, जैसे मास्टर्स का स्टूडेंट है, उसने यूके जाना है और वो सिंपल IELTS एकेडमिक एग्जाम दे देता है, और उस केस में उसने फिर राइटिंग में कम बैंड्स लिए होते हैं, लाइक इफ़ इट्स 6 बैंड्स उसको रिक्वायर्ड थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 5.5 ले आता है. तो इन दैट केस एकेडमिक भी तो उसने किया हुआ है ना, दैट एडवांटेज वुड नॉट बी applied in that particular person's case. The advantage is only for the UKVI, not for the simple academic, right? और UKVI का जो advantage है, that only works for the UK country, not for other countries. It won't be applicable in Canada, it won't be applicable in New York, it won't be applicable in Germany or other Korean countries, whatever. इसीलिए UKVI को support जो है वो यूके में किया जाता है, बट येस UKVI एकेडमिक इज एक्सेप्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आपने IELTS एकेडमिक UKVI किया, आपको शक था कि प्रोबेबली मेरा ये वाला मॉड्यूल वीक है तो मेरे इसमें बैंड्स नहीं आएंगे, आपने UKVI एकेडमिक कर लिया, बट आपने ले लिए 6 बैंड्स ले लिए, आपने ओवरऑल 6.5 स्कोर कर लिया, और बाकी मॉड्यूल्स में भी आपने 6 बैंड्स ले लिए. इन दैट केस स्टूडेंट, अब आपने देखा कि मेरी रिक्वायरमेंट तो कनाडा के लिए भी पूरी हो रही है, कनाडा के लिए भी मुझे 6.5 बैंड्स चाहिए थे और 6 मिनिमम चाहिए था, और यू हैव अचीव्ड दैट, लेकिन आपने दिया IELTS UKVI एकेडमिक था, आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो UKVI एकेडमिक इज एप्लीकेबल इन एवरी कंट्री, यू कैन गो देयर विद दिस टाइटल ऑफ IELTS. बट द एडवांटेज, अब ये नहीं हो सकता कि आपने राइटिंग मॉड्यूल में 5.5 ले लिया और आप फिर भी कह रहे हो कि मैंने कनाडा जाना है, तो दैट वॉन्ट बी पॉसिबल इन दिस केस. UKVI एकेडमिक का एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ यूके में फिर उस टाइम पे वर्क करेगा. आई होप इट्स क्लियर. मैं फिर से जस्ट 2 to 3 लाइन्स में इसको वाइंड अप कर देती हूँ. वो स्टूडेंट जो FSC के फ़ौरन बाद फाउंडेशन में जाते हैं बैचलर से पहले, वो UKVI देंगे, दैट इज़ कंपल्सरी फॉर देम. एंड दो स्टूडेंट जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, दे थिंक दे आर बिट वीक इन एनी ऑफ द मॉड्यूल, वो UKVI दे सकते हैं. देयर एडवांटेज विल ओनली वर्क in UK, but UKVI academic is applicable in every country. Okay, now let's move to the next type of IELTS, which is general IELTS. Well, students, general IELTS जैसे नाम से थोड़ा सा लगे, it's a bit about generalism और general सी चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर. Of course चल रही हैं, but general IELTS is for those who actually want to migrate to any other country. You can say if the case is immigration, if a person wants to settle outside with the family, तो वो immigration के लिए apply करेगा, and for that
he or she needs to go through general IELTS, ठीक है, वो academic नहीं दे सकता. Now इधर से भी देख लेते हैं. This test is for test takers wishing to migrate to any country in which native language is English, and for those wishing to train or study below degree level, this is also required for work visa. Yes, immigration के लिए तो जाना ही है, तो general IELTS करना है, but those individuals जो सिर्फ वर्क वीज़ा के लिए वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके उन्हें वर्क करना है, सेटल नहीं होने लगे, बट येस आफ्टर ईयर्स उनको लगता है कि वो वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो उस केस में पहले तो वो वर्क वीज़ा के केस में जनरल IELTS करके जाएंगे, बट अगर वो वहाँ पे जाके सेटल होते हैं उस केस में थोड़ा सा और सिनेरियो हो जाएगा, तो दैट विल बी अ डिफरेंट केस. स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम एकेडमिक से जनरल पर आए हैं, अब हम इन दोनों के डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक IELTS टेस्ट एंड जनरल IELTS टेस्ट. ये तो हमें पता लग गया कि एकेडमिक कब देना है और जनरल IELTS कब देना है, बट व्हाट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू एग्जाम्स, वो देख लेते हैं. वेल, मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेस्ट इज देयर स्ट्रक्चर. बोथ हैव 4 मॉड्यूल्स इन इट. यस, पहला एग्जाम, whether it is academic IELTS or general IELTS, the very first test will be the listening test. ठीक है, once you are completed listening, fine, invigilators will take the test from you, and दूसरे हाथ से they will be giving you the next exam, which will be the reading module. तो the next will be the reading test, both again in academic as well as general, दोनों में reading होगा. आफ्टर एन आवर रीडिंग विल बी ओवर, फिर आपसे रीडिंग टेस्ट लिए जाएंगे, राइटिंग टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे. अगेन राइटिंग मॉड्यूल इज सेम बोथ इन एकेडमिक एंड जनरल. द लास्ट विल बी द स्पीकिंग टेस्ट विच विल ऑल्सो बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम. वेल, इट वॉज अबाउट द टेस्ट और द मॉड्यूल्स, द सीक्वेंस. वेरी फर्स्ट लिसनिंग, 2 रीडिंग, 3rd राइटिंग, 4th स्पीकिंग. ठीक है, बट अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके डिफरेंसेस अंदर टेस्ट में क्या होगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड लिसनिंग मॉड्यूल विल बी द वेरी फर्स्ट एग्जाम इन बोथ द केसेस. वेल स्टूडेंट्स, लिसनिंग टेस्ट इज टोटली सिमिलर, और यू कैन से द पैटर्न ऑफ द लिसनिंग एग्जाम, इधर इट्स फॉर जनरल और एकेडमिक, इज 101% एग्जैक्टली सिमिलर. ठीक है, वही क्वेश्चंस जो एकेडमिक वालों को आ रहे हैं वही जनरल वालों को भी आ रहे हैं. ओके, सिंस लिसनिंग टेस्ट, अच्छा लिसनिंग टेस्ट आप सुन रहे हो वर्ड और बार बार मैं बोल रही हूँ, आपके माइंड में भी तो आ रहा होगा ना, जैसे सुनते ही व्हाट इज लिसनिंग टेस्ट. ओके, एज अ नेम इज इंडिकेटिंग दैट यू आर गोइंग टू लिसन समथिंग. व्हाट इज दैट एक्चुअली? आई वाज थिंकिंग दैट there might be a person sitting in the examination halls and he might be speaking something, you people are listening. No, it's not like that. Well, listening test is actually an audio which is being played on the tape recorder, and you will be listening that audio via headphones. You people are provided with a Bluetooth headphone set in the very beginning of the test, और बार बार they are asking you to get your headphones checked, ताकि आप लोग भी तसल्ली कर लो that these headphones are properly working, or maybe some of the individuals do not know how to operate them, how to use them, so they are actually giving you the demos that how to use those while listening the audio or something. तो आप लोग भी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बार बार उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स, इफ इट occurs in the middle of the test, that will only be your fault. It will be considered your problem, because उन्होंने तो आपको स्टार्टिंग में कह दिया था ना इन्विजिलेटर्स ने, that get your headphones checked, use them, get to know each and everything about it. So if you make a blunder in between, or if you think के दरमियान में आपको आवाज़ नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, that will only be your fault. उस टाइम पे there will be no person he or she will be helping you, right? और एक बात याद रखिएगा कि if your listening test doesn't go the way you wanted, the rest of the test will be अगर आप उनको अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हो, that won't make any difference. और ऑब्वियसली ऐसा होता है ना, जैसे हमारा एक एग्ज़ाम गलत होता है या ख़राब होता है, सो हम अल्लाह ताला से कहते हैं या हम खुद से एक अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि फ़ाइन ये वाला बुरा हो गया तो कोई बात नहीं, बाकी अच्छे कर लेंगे. लेकिन इन केस ऑफ IELTS एग्जाम, इफ़ द first test, which is the listening test, if that goes wrong or if there goes some problem in it,
देन स्टूडेंट्स आप रीडिंग और राइटिंग में जितना अच्छा परफॉर्म कर लें, दैट वोंट हेल्प यू. You people have noticed and you people have been knowing that a person who is doing FSC or something, maybe matriculation, whatever, if that person gets a supply in one of the exam, let's suppose एक बच्चा है, उसके इंग्लिश में सप्ली आ गई है, एंड उसके लिए क्या करना होगा उसको, यही ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर वो अपने जूनियर्स के साथ दोबारा से वो एग्ज़ाम देगा और उसको क्लियर करेगा सप्ली को. ऐसा ही होता है ना, मतलब उसको सारे एग्जाम्स को क्लियर नहीं करना पड़ता. ही और शी जस्ट हैज़ टू गो थ्रू वन एग्जाम जिसमें उसकी सप्ली आई होती है. बट इन केस ऑफ IELTS एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, if you get troubled or if you are not performing well in any of the module, if you haven't performed well in any of the module, you have to reappear or you have to retake the IELTS exam again, all the modules. यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम का रीटेक नहीं होगा. If you get less number of bands in listening, that doesn't mean you are going to reappear in the listening module only. No, you will be appearing in all the modules again. As I always used to say, students, IELTS exam is not just a matter of about 2,000 to 3,000 rupees. It's literally a costly test. It's about 40,000 approximately, because a lot of taxes are involved now. So yeah, it's a matter of about 40,000. So I would always say, हमेशा तैयारी करें और फिर टेस्ट के लिए अपेयर हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट एक बार पता लग गया, अच्छा जी पहला तो लिसनिंग टेस्ट होता है, फिर रीडिंग, ओके लिसनिंग भी कर लूँगा, रीडिंग भी कर लूँगा, राइटिंग में क्या है, अपनी कहानियाँ तो लिखनी है. इट्स नॉट लाइक दैट. प्रॉपर एक एक पैटर्न है दैट यू हैव टू फॉलो इट. ब्रिटिश काउंसिल ने एक रूल सेट किया है दैट आपको वो फॉलो करना है. उसने एक प्रोटोकॉल बनाया दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट इन दिस वे, दिस इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट. सो यू हैव टू फॉलो दैट. ओके, मैं ये नहीं कहती स्टूडेंट्स कि आप एक या दो दफ़ा ओवरव्यू लेकर या गो थ्रू करके किसी प्रैक्टिस टेस्ट को आप एग्ज़ाम में पेयर हो जाएं. कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं ऐसे, और वो मैं समझती हूँ वो गॉड गिफ्टेड होते हैं. जो जैसे कुछ लोग जो हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, दे वर बॉर्न इन सऊदीया, और वहाँ पे उनका जो ब्रॉटअप हुआ, दे लिटरली यूज्ड टू स्पीक लाइक देयर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. उन पर मुझे इतनी मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी. बिकॉज स्टूडेंट्स देखें, मैंने स्टार्टिंग में ये बात ज़रूर की थी कि आपको प्रो होना नहीं है इसमें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही निल हैं और आप जाके वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं. क्योंकि इसमें बेसिक्स तो आनी चाहिए ना आपको टेंसेस आने चाहिए, ठीक है, आपके ग्रामर अप टू द मार्क होनी चाहिए. ओके, आई एग्री, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन का रोल नहीं है. जैसे होता है कि आपने कहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं, कहाँ कॉमर्स लगाने हैं, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, ये तो चले बेसिक्स हैं कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कैपिटल लेटर कहाँ पे आना है, ठीक है. किसी इंडिविजुअल का नाम है, कोई प्लेस है, दैट इज़ ऑब्वियस. ये तो ऑब्वियस ही बच्चों वाली चीज़ें हैं दैट इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं. अब यहाँ तक के बच्चे इस तरह की ब्लंडर मार रहे होते हैं. हैव यू एवर रिटन, जैसे फॉर सपोज आई एम मेकिंग अ सेंटेंस, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आपने कभी आई को स्मॉल लेटर में लिखा हुआ देखा कहीं पे? नहीं देखा. तो इस तरह के ब्लंडर वहाँ पे एग्जाम में मार रहे होते हैं. आई को स्मॉल लेटर में कभी भी नहीं लिखा हुआ हमने देखा. आई मीन जब इंडिविजुअली हम आई लिख रहे होते हैं, आई मीन्स मी, माई सेल्फ, तो उस केस में आप ऑब्वियसली आई को कैपिटल ही लिखते हैं. इफ़ दे, अगर स्टूडेंट्स को उस टाइम पे, अब यकीन करें, वो इतने पैनिक मोड में होते हैं, इफ़ द आई कम्स इन द मिडल ऑफ द स्टेटमेंट, दे लिटरली स्टार्ट थिंकिंग कि आई कैपिटल लिख रहे हैं या स्मॉल. वहाँ पे इस तरह की कंडीशन हुई होती है. ओके, लेट्स कम बैक अगेन. तो हम बात कर रहे थे लिसनिंग मॉड्यूल के ऊपर. तो स्टूडेंट्स, लिसनिंग मॉड्यूल में जैसे मैंने बताया दैट यू आर प्रोवाइडेड विद अ ब्लूटूथ हेडफोन सेट्स, और आप लोग उसको बार बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इन द बिगिनिंग और एट द एंड, और नॉट एट द एंड. आप जैसे सुन रहे हैं अपने क्वेश्चंस को, आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको, बिकॉज यू आर एक्चुअली प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन पेपर, और आप कानों से साथ साथ सुन रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए आपने किस तरह से कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ग्रैब करनी है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर, और आप वो साथ साथ वहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है. लिसनिंग टेस्ट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अबाउट 40 मिनट्स, इन विच 30 मिनट्स में आपको ऑडियो सुनाई जा रही होती है, एंड यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है.
we'll be discussing how the questions appear in the exam, how many number of questions are there, how many sections are there, what topics are discussed over there, ताकि हम mentally भी prepare हो जाए कि वो क्या क्या topics हो सकते हैं, ठीक है. And yeah, what else? Yes, I was telling कि 30 minutes का listening का exam है, in which 30 minutes की audio होगी, and मैंने लेकिन starting में तो मैंने कहा कि 40 minutes लगते हैं total. तो 40 minutes कैसे हुआ? मैंने तो अभी 30 बोला था, right? तो at the end आपको 10 minutes extra दिए जाते हैं to shift your answers on the answer sheet. Okay, if you guys can recall your FSC level or metric level, then you people used to solve bubble sheets after you attempted the multiple choice questions on the question paper, right? In the case of listening exam, there is no bubble sheet at all. There is an answer sheet which consists of boxes. ठीक है, आपको उन boxes में अपने answers लिखने हैं. Because questions can be of various types, fill in the blanks, multiple choice questions. So you have to shift the answers on the answer sheet. I'll be showing you how the answer sheet will be looking like and how you will be shifting the answers on the answer sheet. Each and everything will be discussed in the listening classes. Okay, so the listening test which we discussed right now, I said it is totally the same in both the cases, either it's academic or general, right? Now, after you complete the listening test, then we switch on to the reading module, and the reading module is right after the listening. Note pause is given to you people. यहाँ वहाँ पे आपको कोई भी नहीं कहता चलें पानी पी लें, थोड़ा सा सुकून कर लें, नहीं. Once you wind up the listening, okay fine, reading फ़ौरन से पहले दे दिया कि आपको, and साथ ही आपका 1 hour का जो टाइम ड्यूरेशन है रीडिंग मॉड्यूल के लिए, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है. Well students, there is a bit difference in this module with respect to both the types, either it's academic or general. In case of academic, you are given full-fledged chapters, or you can say passages. आपको याद होगा, you people used to solve comprehension passages, जिसमें छोटे छोटे से पैराग्राफ्स होते थे और नीचे 4 to 5 क्वेश्चंस दिए होते थे. एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव टू first of all read the question and then you were supposed to find the answers from the reading passage, right? But in case of IELTS examination, it's a bit like that. लेकिन यहाँ पे छोटे passages नहीं हैं, full-fledged long chapters. If you guys remember Mr. Chips, those who have studied FSC, oh yeah, since it was COVID in the previous year, so yeah, I just remember कि इस year में I guess English का तो exam ही नहीं होता. But yes, obviously आप लोगों ने books तो ली थी लेकिन exam नहीं हुआ unfortunately due to some reasons. तो जितने मिस्टर चिप्स के एक चैप्टर की लेंथ होती है ना, probably उतनी ही लेंथ होगी, और आपको उसके साथ different type of questions दिए होंगे at the end and you people will be solving it. Students, the passage will not be just one. There will be 3 different passages and the passages will be on different topics. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि passage number 1 का sequel passage number 2 होगा और उसका sequel passage number 3 होगा. No, it's not like that. Totally different chapters, totally different topics, totally different scenario. No connection with the other passages. ठीक है? This is for the academic IELTS, जिसमें long passages हैं, लेकिन जो टेस्ट है या जो क्वेश्चंस हैं दैट इज टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड. यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस का कोई सिनेरियो ही नहीं है, बोथ इन द लिसनिंग एज वेल एज इन द रीडिंग मॉड्यूल. जस्ट ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, मैच द हेडिंग्स, मैच द कॉलम, these type of questions. And for that you're given 1 hour. You people might be thinking 1 hour for the reading? Oh, that seems to be very simple. Yes, we are gonna do that. Keep it in mind, reading is not that easy, by the way. It requires a lot of your skills because students, listening में ना आप सब कुछ सुन रहे होते हैं, so आपको ना कहीं से कुछ देख के पढ़ना नहीं है. But in case of reading, you are doing multitasking actually. आप question पहले पढ़ते हो, फिर आप पैसेज पे जाते हो, आप पैसेज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर आप साथ साथ आंसर्स भी ढूंढ रहे हैं. So you are doing actually a lot of things one by one. और उस टाइम पे आपका दिमाग जो है ना दैट इज़ एक्चुअली लाइक बस हो जाए किसी तरह से, बस सब कुछ बंद हो रहा होता है उस टाइम पे. लेकिन एक बात स्टूडेंट्स, इफ़ यू परफॉर्म लिसनिंग गुड, या आप खुद ही मेंटली सेटिस्फाई हो जाते हैं और आपको लगता है दैट आपने बहुत अच्छे परफॉर्म किया, यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस और अप हो जाता है और रीडिंग आप और अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं.